his cavalcade has arrived at the venue. And as conveyed earlier to you, once he arrives, he would plant an araucaria to make this occasion into a memorable one. पौधारोपण के माध्यम से माननीय उपराष्ट्रपति जी का एक प्रयास होगा कि इस अवसर को यादगार बनाया जाए। आदरणीय उपराष्ट्रपति जी इस वक्त डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा पर पुष्प अर्पण कर रहे हैं, उन्हें श्रद्धांजलि दे रहे हैं। हमारे संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। आप सब लोग जानते ही होंगे कि डॉक्टर अंबेडकर संविधान ड्राफ्ट कमेटी के हेड थे, जिसमें 7 मेंबर्स थे, लेकिन किसी कारणवश सेहत या अन्य कारणों से all the members were not able to contribute towards drafting of our constitution, and this was a big responsibility which was carried forward by Dr. Bhimrao Ambedkar. And after that, for 100 days, he stood in every meeting and explained the draft to each and every person, and every point was discussed. Elaborate way by Honorable Dr. Bhimrao Ambedkar. So Honorable Vice President is giving floral tributes to Dr. Bhimrao Ambedkar. विश्व का सबसे बड़ा गणतंत्र है भारत, और हमारे गणतंत्र के सफ़र में
एक महत्वपूर्ण पड़ाव है ये, जब हम गणतंत्र का 75वां वर्ष मनाने के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं। आज का अवसर है जब नया भारत नए संकल्पों के साथ, नई सोच के साथ, नए लक्ष्यों को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है, और हम सब इस सफ़र के सहभागी हैं। आज का ये कार्यक्रम इन मायनों से बेहद महत्वपूर्ण, क्योंकि आज जब हमारा देश जीवटता के साथ भविष्य की ओर कदम बढ़ा रहा है, तो हम सब उसमें अपना योगदान दे सकते हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी का सभागार में आगमन। कार्यक्रम का शुभारंभ राष्ट्रगान के साथ। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता, पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा, तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे, गाहे तव जय गाथा। जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता, जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। नमस्कार। भारतीय गणतंत्र के लिए एक गौरवशाली पड़ाव, भारतीय गणतंत्र के 75वें वर्ष के सुअवसर पर आज एक विशेष अभियान का शुभारंभ होने जा रहा है, और इसके सुअवसर पर हम माननीय उपराष्ट्रपति आदरणीय श्री जगदीप धनखड़ जी का हृदय से अभिनंदन करते हैं, वंदन करते हैं। मंच पर आसीन माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार
संस्कृति तथा संसदीय मामलों के राज्य मंत्री श्री अर्जुन राम मेघवाल तथा भारत के अटॉर्नी जनरल श्री आर वेंकटरमणी तथा सचिव न्याय विभाग श्री SKG राहते, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव का भी हम हार्दिक स्वागत करते हैं। विधि क्षेत्र के संस्थानों के छात्रों, फैकल्टीज, वाइस चांसलर्स तथा कॉमन सर्विस सेंटर से हमारे साथ जुड़े कर्मजीवियों का भी हृदय से स्वागत। ये कार्यक्रम YouTube लाइव, FB लाइव पर लाइव स्ट्रीम भी किया जा रहा है। सुदूर क्षेत्रों से, गांवों से, ग्राम पंचायतों से, विभिन्न शहरों से, सोशल मीडिया के माध्यम से भी हमारे साथ इस कार्यक्रम में सम्मिलित सभी अतिथिगण का भी हार्दिक स्वागत। To underline the importance of today's program and to welcome the distinguished guests, I would like to invite Shri SKG Rahte, Secretary, Department of Justice, Government of India. Honorable the Vice President of India, Shri JAGDEEP DHANKHAR ji, Honorable Minister of State, Independent Charge for Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, Honorable Attorney General of India, Shri R. Venkataramani ji, Honorable Vice Chancellor of Indira Gandhi National Open University, Professor Shri Nageshwar Rao ji, CEO and MD, Common Services Center, Shri Sanjay Rakesh ji, senior officials of various ministries, departments, government organizations, senior faculties, vice chancellors, students of law colleges, our tele-law functionaries, media friends, ladies and gentlemen. Namaskar. It's my great privilege to welcome you all to celebrate our country's entry into the 75th year of Republic on 26 January 2024. Today, on this momentous occasion, we have gathered here to recommit ourselves to the constitutional values, ideals, and principles handed over to us by our constitution makers. At the outset, we are deeply honored to have amongst us as our chief guest on this great occasion a very high-level constitutional authority, the Honorable Vice President of India, Shri JAGDEEP DHANKHAR ji, who is himself a prominent legal luminary and a constitutional law expert. On behalf of the entire Department of Justice, I heartily welcome you, sir. I would like to convey my gratitude to our Honorable Minister, Law and Justice, Shri Arjun Ram Meghwal ji, whose leadership and exemplary vision helped us conceive and design today's campaign to mark the 75 years of our Constitution and Indian Republic. I would like to extend a very warm welcome to the learned Attorney General of India, Shri R. Venkataramani ji, whose dedication to the cause of justice has earned him the respect and admiration of legal minds across the country. I also welcome Mrs. Venkataramani ji, who is also present amongst us. I would also like to welcome Professor Nageshwar Rao ji, Vice Chancellor IGNOU, who has, through his initiatives, brightened the path of learning for those residing in remote and rural areas. I heartily welcome all our esteemed guests present here, the legal academia, our young law students, our tele-law functionaries, our paralegal volunteers who have joined from far and wide. We are indeed privileged to witness our country's 75th year of Republic, and no doubt this is a momentous occasion for every citizen of the country, as it signifies how the Constitution of India, drafted by Bharat Ratna Dr. B.R. Ambedkar ji, has successfully guided the largest democracy of the world for more than 7 decades, withstood the test of time during trials and tribulations, and helped in the actualization of hopes and aspirations of millions of Indians. It has amply proved to be a vibrant, dynamic, and living document, flexible enough to meet the needs and requirements of changing and emerging times. Now, during this Amrit Kal,
it will continue to be the beacon light to guide us all in achieving the goal of Viksit Bharat at 2047. To recommit ourselves to the Constitution and to commemorate this grand occasion, the Department of Justice is organizing a pan-India series of activities in the form of a year-long campaign, HAMARA SAMVIDHAN, HAMARA SAMMAN, with the objective to enhance awareness about the Constitution, sensitize the citizens on their legal rights, duties, and responsibilities, and reinforce the principles of Panch Pran and constitutional value in one's life so that every citizen of the country becomes an informed citizen, a Jagrit Nagarik who could play a contributive role in building Viksit Bharat by 2047. On this occasion, we would also showcase the launch of Nyay Setu AI chatbot services that aims to make available all legal services on demand at the click of a button with the support from Bhashini for overcoming language barriers. Department of Justice, in collaboration with IGNOU, is also introducing a new course for skilling and certifying paralegal workforce, which will enhance their employability. Department of Justice, during all these years, in order to facilitate administration of justice, has been making significant contribution in creating, upgrading, and modernizing judicial infrastructure, establishing fast-track special courts, ensuring robust contract enforcement regime for ease of doing business, leveraging technology to next higher level through e-courts project for futuristic end-to-end digital paperless courts for maximizing ease of justice. As part of its proposed vision at 2047, the Department of Justice has chosen justice for all as its goal. I am sure this goal of Department of Justice aligns seamlessly with the principles of HAMARA SAMVIDHAN, HAMARA SAMMAN, fostering inclusivity, accessibility, skilling for prompt delivery of justice. I thank you all today for your gracious presence and invite you all to join in this celebration and launch of the campaign HAMARA SAMVIDHAN, HAMARA SAMMAN, where justice will no longer remain a privilege of few, but will become a right of every citizen in every corner of this country. Thank you. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद सचिव न्याय विभाग श्री एस.के. जी रहते। मान्यवर, हमारे बीच आज उपस्थित है हमारे देश के अटॉर्नी जनरल, और भारत का संविधान हमारे अटॉर्नी जनरल को विशेष दर्जा देता है। ही इज़ द हाईएस्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया। Ladies and gentlemen, I take this opportunity to invite the Honorable Attorney General of India, Shri R. Venkataramani, to share his views with the august gathering. Please welcome Shri R. Venkataramani. To be addressing a gathering of multitude of collection of Indian citizens here in the presence of two contemporary architects of constitutional progress, the Honorable the Vice President and the Honorable the Law Minister, is a great privilege for me. Why do we need to celebrate a constitution? None of us here, I suppose, have witnessed the freedom struggles and have probably been even keen to read the travails which those who fought for freedom have made it possible for us today. And it's available only in history books, chronicles, writings, so on and so forth. But if only we're able to go back in point of time and try to visualize what made and what contributed to the freedom of the country. And the great idea of constitution being born with us is something very important. Law schools perhaps can teach you only very little of them. But I suppose when we assemble here in such gatherings, and we are told that we are part of a great journey ahead in future, carrying the idea of constitution with us. It's something very different. I find a lot of law students here, and all that I can appeal to you is this idea of a constitution is now part of
human psyche all over the world. And why do we need to celebrate this idea of constitution? It's not merely because we have a freedom and a free country, but something beyond that. As I go to and visit law schools, I keep telling law students that all of us as law students and lawyers have a common human social responsibility to the country and to the most deprived sections of the community for whom the Constitution means much more than who are in the higher ladders of social and economic life. And if we assemble in meetings like this, in congregations like this, I suppose we tell ourselves, remind ourselves, and then continue to remind ourselves that our commitment to this common social responsibility is something far more fundamental than anything else in life. You only want us to recall what Baba Sahib Ambedkar did for the making of the Constitution. The deepest feelings he had for making the Constitution a living document. I think all of us must go through that at a very individual level, at a very personal level. Otherwise, I think it remains a mere reading which can dry up after a point of time. Therefore, it is very important that in congregations like this, when we start celebrating the Indian Constitution, we are not stopping only with the text of the Constitution, but we are talking about the march of the Constitution after the Constitution became part of our life. 75 years of our constitutional life is something wonderful. When the American Constitution was framed in 1789, Thomas Jefferson and James Madison were the two famous architects of the Constitution, said a Constitution must not be ruled by those who are dead, namely that every generation the Constitution must be rewritten. And Thomas Jefferson thought every 15 years there must be a rewriting of the Constitution. But what is the rewriting of the Constitution? People's participation actively in the working of the Constitution. It's not merely legislatures, parliaments, courts, but people's active participation in making the Constitution a living document is what makes it a generation after generation of a living Constitution. And that's what we are talking about, and thus we are assembled here today. I suppose all of us will commit ourselves to the wonderful making the Constitution a living document. Now, about 200 years of constitution making across the globe, I find that about 780 attempts to making constitutions. A country like France had more than 15 to 20 times rewriting the constitution because there were revolutions, there were coups, the military coups. But unfortunately for us, we passed through all those kind of political, social turmoils and temptations and has remained united as a nation. There were challenges within the Constitution, challenges externally in the political sphere. Today we are globally challenged. Therefore, in order to meet these global domestic challenges, how do we make the Constitution and continue to make the Constitution a living document? The only answer is people's active participation, commitment to every aspect of the Constitution. And I'm sure that as we go ahead in another 75 years, we would have celebrated much more than what the American Constitution celebrated over 200 years of its existence, or what an unwritten Constitution of Britain has done over a long period of time. I suppose in times to come, with its people's participation, commitment, the Constitution of India, its story, its history would have been written very, very differently. And in order to make that writing very differently, we are assembled here today and mark a beginning over a long period of time. Thank you for your attention. I once again say I'm privileged to be part of this congregation. Thank you so much, Mr. R. Venkataramani, the Attorney General of India. मान्यवर, आज हम गर्व की अनुभूति के साथ कहते हैं, हाँ मैं भारतीय हूँ, लेकिन इसी गर्व के साथ जिम्मेदारी का एहसास भी जुड़ा है और हमारे संविधान के प्रति हमारी प्रतिबद्धता भी जुड़ी है, जिसे आगे बढ़ाएगा वो कैंपेन जिसका आज शुभारंभ होने जा रहा है। मैं माननीय उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी से सादर अनुरोध करती हूँ कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर विशेष अभियान हमारा संविधान हमारा सम्मान का उद्घाटन करें। देश भर के 300 से भी अधिक संविधान सभा के सदस्यों की अथक परिश्रम और जोरदार मंथन के बाद भारत के लोगों ने स्वयं को अमृत कलश के रूप में दिया एक नायाब उपहार, संविधान।
इसी जीवंत और पवित्र मार्गदर्शिका के बल पर हमें दुनिया का सबसे बड़ा और महान लोकतंत्र होने का गौरव प्राप्त है। 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों सहित 140 करोड़ से भी ज्यादा लोगों की विविधता भरे इस देश को एक सूत्र में पिरोता है हमारा संविधान। संविधान है हमारे देश का महाप्राण, जो हर एक नागरिक को सामाजिक, आर्थिक, राजनैतिक न्याय के साथ साथ प्रतिष्ठा, गरिमा और अवसर की समानता भी प्रदान करता है। गर्व है हमें अपने संविधान पर, जो हमें प्रकाश और आगे बढ़ने की प्रेरणा प्रदान करता है। स्वतंत्रता की 75 साल की गौरवपूर्ण यात्रा हमने इसकी मदद से पूरी की। समय समय पर जरूरत के अनुसार इसे और बेहतर किया। वंचितों तक इसकी पहुंच को और आसान बनाने को प्रतिबद्ध हैं हम। इसलिए लोकतंत्र के 75वें वर्ष में पूरे वर्ष हम करेंगे संविधान समर्पित। सबको न्याय, हर घर न्याय, नव भारत, नव संकल्प, विधि जागृति जैसे विविध अभियानों का आयोजन संविधान में लिखी समानता, कर्तव्य और अधिकारों के आधार पर ही हम संकल्प से सिद्धि की मंजिल भी हासिल करेंगे। हमारा संविधान, हमारा सम्मान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। और इस अभियान से जुड़ी सारी जानकारी आप माईगव पोर्टल डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की वेबसाइट से भी प्राप्त कर सकते हैं। और माईगव पोर्टल पर इसके बारे में सारी जानकारी दी होगी। जो अलग अलग एक्टिविटीज़ हमारे देश के नागरिकों के लिए आयोजित हैं, वो एक्टिविटीज़ भी इस पोर्टल पर दी होंगी, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, माईगव पोर्टल। साथ ही इसमें जो एक्टिविटीज़ हैं उसमें नव भारत नव संकल्प, पंच प्रण प्रतिज्ञा यानी प्लेज लेना, पंच प्रण रंगोत्सव, पोस्टर निर्माण जैसी एक्टिविटीज़। तो ये विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से देश के जन जन तक इस कैंपेन को, इस अभियान को पहुंचाने का एक प्रयास किया जाएगा। मान्यवर, आज का भारत डिजिटल भारत है और हम जानते हैं जो भी समस्याएं हमारे सामने आती हैं, तकनीक के माध्यम से उसका हल भी निकाला जाता है और जीवन सुगमता को भी आगे बढ़ाया जाता है। समाज के अंतिम व्यक्ति तक विधिक सेवाएं पहुंचें, इसके लिए टेली सुविधा सेवा अहम माध्यम भी बन रही है। और अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से आदरपूर्वक अनुनय करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर टेली सुविधा सेवा न्याय सेतु लॉन्च करें। चाचा प्रणाम। प्रणाम। चाचा ड्यूटी जा रहे हैं, बिटिया का ध्यान रखिएगा। ठीक है, कोई बात नहीं। आपकी बेटी हमारी बेटी। जाओ बिटिया। ओए होए, कहाँ चली? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से परेशान हूँ, मेरी मदद कीजिए। भारत में कई ऐसे कानून हैं जो महिलाओं एवं बच्चों के सशक्तिकरण एवं संरक्षण के लिए बनाए गए हैं। अगर आपको और सहायता की जरूरत है तो कानूनी सलाह के लिए लीगल एडवाइस को चुनें और कोर्ट में वकील के प्रतिनिधित्व के लिए लीगल असिस्टेंस पर क्लिक करें। अगर आपको अब भी किसी मानवीय सहायता की जरूरत है तो आप हमारे इस टेली फैसिलिटेशन सर्विस के तहत IVRS बेस्ड हेल्पलाइन सॉल्यूशन को चुन सकती हैं। इसके लिए आप 14454 डायल करें। धन्यवाद। नमस्कार, मैं आशीष आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा नाम गीता है। मैं छेड़छाड़ से बहुत परेशान हूँ।
मेरी मदद कीजिए। आपके मामले को देखते हुए आपकी बात अपने काउंसलर से कराता हूँ। आप अपनी बात इनसे खुलकर कहिए। इससे आप अपने आप में आत्मविश्वास महसूस करेंगी। इसके पश्चात मैं आपको लॉयर से कनेक्ट करा दूंगा। लोगों तक न्याय की पहुंच को और आसान करने के लिए न्याय विभाग भारत सरकार की पेशकश न्याय सेतु, एकदम गोपनीय और सुरक्षित माध्यम जिसे समाज के सभी वर्गों के साथ साथ खास तौर पर दिव्यांगों, महिलाओं, बच्चों और वरिष्ठ नागरिकों सहित सभी जरूरतमंदों को ध्यान में रखकर डिजाइन किया गया है। न्याय सेतु एक ऐसा प्लेटफॉर्म जहां कानूनी जानकारी, टेली लॉ और न्याय बंधु की सभी सेवाओं का है समागम। न्याय सेतु, सभी होंगे अब और सशक्त। न्याय पाने की राह अब होगी आसान। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। हमारे देश में सही न्याय, सबके लिए न्याय, ये अवधारणा बेहद ज़रूरी है, विशेषकर मजबूत लोकतंत्र के लिए। और एक्सेस टू जस्टिस प्रोग्राम डिजाइनिंग इनोवेटिव सॉल्यूशंस फॉर होलिस्टिक एक्सेस टू जस्टिस यानी दिशा सफलता के नए आयाम गढ़ रही है। मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से विनम्रतापूर्वक अनुरोध करती हूँ, कृपया दिशा उपलब्धि पुस्तिका का विमोचन करें। दिशा के तहत टेली लॉ प्रोग्राम में टेली लॉ सिटीजन्स मोबाइल ऐप काम करता है। न्याय बंधु प्रो बोनो लीगल सर्विसेज भी इसमें शामिल हैं और लीगल लिटरेसी यानी कानूनी साक्षरता कार्यक्रम भी इससे जुड़ा हुआ है, जिसमें देश भर के 7 लाख से अधिक लाभार्थी इसका फायदा भी उठा चुके हैं। ये है दिशा उपलब्धि पुस्तिका। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय उपराष्ट्रपति जी। और हमने आपने सबने एक कहावत ज़रूर सुनी है, कोस कोस पर बदले पानी, 4 कोस पर वाणी। और भाषा विधिक सेवाएं पहुंचाने में बाधा न बने, इसके लिए न्याय विभाग भाषिनी और इग्नू के साथ MOU कर रहा है और अब सहमति पत्रों का आदान प्रदान किया जाएगा। सबसे पहले डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तथा इग्नू के बीच सहमति पत्रों के आदान प्रदान के लिए मैं न्याय विभाग के निदेशक श्री बी चंद्र मोहियार तथा इग्नू के डायरेक्टर स्कूल ऑफ लॉ मिस स्वाति पात्रा को आमंत्रित करती हूँ। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और इग्नू के बीच अब सहमति पत्रों का आदान प्रदान। जोरदार तालियों से इस पल का स्वागत करें। बहुत बहुत धन्यवाद। और अब डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस तथा भाषिनी के बीच सहमति पत्रों के आदान प्रदान के लिए मैं न्याय विभाग के निदेशक श्री बी चंद्र मोहियार तथा भाषिनी के CEO श्री अमित नाग को आमंत्रित करती हूँ। भाषिनी के समाधान पहले से ही न्याय सेतु कानूनी सेवाओं की टेली सुविधा में शामिल किए गए हैं। अब भाषिनी के CEO तथा डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के डायरेक्टर आपस में सहमति पत्रों का आदान प्रदान करते हुए। Congratulations. We hope this would pave the way for access to justice for all. बहुत बहुत धन्यवाद। और अब मैं माननीय विधि एवं न्याय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार श्री अर्जुन राम मेघवाल जी से विनम्र निवेदन करती हूं कि कृपया आज के इस अवसर पर अपने मनोभाव प्रस्तुत करें। तालियों से स्वागत करें माननीय मंत्री जी का। हमारा संविधान हमारा सम्मान कार्यक्रम में मंच पर हमें ऊर्जा प्रदान करने वाले भारत के उपराष्ट्रपति जी माननीय जगदीप जी धनखड़ साहब, मंच पर अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया आर वेंकटरमणी जी,
इग्नू के वाइस चांसलर साहब प्रोफेसर नागेश्वर राव साहब, हमारे सेक्रेटरी जस्टिस डिपार्टमेंट में राहटे साहब, संजय राकेश जी, और मुझे यहाँ नज़र आ रही है वेंकटरमणी जी की धर्मपत्नी भी, लक्ष्मी जी भी, आपका भी धन्यवाद, मातृशक्ति को प्रणाम। और नालसा की सेक्रेटरी संतोष भी नज़र आ रही है। सभी यहाँ उपस्थित जो इस कार्यक्रम में आए हैं दिल्ली और आसपास के क्षेत्रों से, सभी गणमान्य नागरिक, मातृशक्ति और पत्रकार साथियों, एक मन में प्रश्न आपके आ सकता है कि हमने 24 जनवरी ही क्यों चुना। जैसे हमारे सेक्रेटरी साहब ने कहा कि हम गणतंत्र के 75वें वर्ष में प्रवेश कर रहे हैं। 26 जनवरी 50 को हमारा संविधान लागू हुआ। हमने 24 क्यों चुना, इसके लिए आपके मन में भी कुछ कौतूहल हो सकता है, प्रश्न भी हो सकता है। तो एक दो जवाब देने की मैं कोशिश करूंगा। प्रश्न कई हो सकते हैं। पहले तो ये वर्ष 2024 चल रहा है, 24 2024 चल रहा है। दूसरा, हमें आज के दिन से ही ये शपथ लेनी है कि हम 24/7 काम करेंगे, 24 घंटे ही काम करेंगे। ये संविधान निर्माताओं ने भी इसकी बात कही है। और अगर इतिहास के पन्नों को आप खंगालेंगे तो 24 जनवरी 1950 को जो अभी हम जब उपराष्ट्रपति जी आए थे और इनके सम्मान में जन गण मन नेशनल एंथम गाया गया था, वो संविधान सभा के द्वारा 24 जनवरी 1950 को ही अडॉप्ट किया गया था। ऐसे कई विषय हैं जिसके कारण ये 24। अब इस 24 में देखिए, न्याय सेतु के माध्यम से टेली लॉ, न्याय बंधु, इसकी जानकारी आप सबको दी है। लेकिन एक जानकारी मैं आपको दे देता हूं कि हमारे इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ये है वंचितों को भी न्याय मिले। किसको? जो छूट गए हैं। कोई बड़ा आदमी है, वकील कर सकता है, कोई गरीब आदमी है, वकील के पैसे भी नहीं है। वंचित जो छूट गए हैं किसी कारण से, परिस्थितियां कुछ भी हो सकती है, सामाजिक परिवेश भी हो सकता है, आर्थिक कारण भी हो सकते हैं, वंचितों को भी न्याय मिले। तो आज एक बड़ा न्याय मुझे लगता है मिला है। इसके लिए हमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बधाई भी देनी चाहिए और उनका धन्यवाद और आभार भी प्रकट करना चाहिए कि कर्पूरी ठाकुर जैसे जननायक को भारत रत्न मिलना, ये भी वंचितों तक भारत रत्न की पहुंचने की प्रक्रिया शुरू हुई है। ये न्याय का दिवस ही। इस विषय में काफी बातें आई है, अमृतकाल है। देखिए, हमने संविधान की जब हम बात करेंगे, हमारा संविधान और हमारा सम्मान, तो हम थोड़ा अगर इसको आगे चलते हैं तो हमारे संविधान में कुछ चीजें लिखी हुई है जिसके कारण कोई ऐसा नहीं रह सकता कंफ्यूजन में। किसी देश के संविधान में इतना स्पष्ट लचीला भी है हमारा संविधान और कठोर भी है। हमारा संविधान इमरजेंसी में कैसे काम करेगा, इसकी बात भी कही गई है। हमारे संघीय ढांचे को भी महत्व दिया गया है, लेकिन जरूरत पड़ने पे एकात्मक भी हो जाता है। ये हमारे संविधान की विशेषता है। इसलिए हमारे संविधान को अच्छी तरह से पढ़ना, उसका सम्मान करना इसलिए जरूरी है कि हमारे आसपास ही बहुत से देश आजाद हुए थे। और हम पड़ोसी मुल्कों की बात करें, हमारे पड़ोस के मुल्कों की बात करें, तो कहीं न कहीं अशांति नजर आती है। हमारे पड़ोस के मुल्क में अशांति है, इधर वाले मुल्क में भी और उधर वाले मुल्क में भी बहुत ज़्यादा शांति नहीं है। नीचे दक्षिण में किसी पड़ोस के मुल्क से बात करें तो वहाँ भी कोई ज़्यादा तरक्की नज़र नहीं आती। ऊपर उत्तर के किसी मुल्कों से बात करें उनकी, लेकिन हमारा देश निरंतर प्रगति क्यों कर रहा है? हमारे देश में शांति क्यों बनी हुई है? हमारे देश में लोकतंत्र मजबूत क्यों हुआ है इन 75 सालों में? अगर उसका एकमात्र कोई कारण है तो हमारा संविधान है। हमारा संविधान जो बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमको दिया है। माननीय उपराष्ट्रपति जी, मैं आपको याद दिला रहा हूं, अभी आप जब बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी को नमन कर रहे थे तो आप भावुक भी हो रहे थे उनकी तस्वीर को देख करके। मैं आपको याद दिला रहा हूं कि जिस ऑडिटोरियम में हम बैठे हैं
इसका नाम भी शायद भीम ऑडिटोरियम है, भीम ही है ना नाम इसका, इसका नाम भीम ऑडिटोरियम है। तो भीमराव अंबेडकर जी को आपने नमन किया, भीम ऑडिटोरियम में हम सबको आप ज्ञान देंगे, और आप भारत के उपराष्ट्रपति हैं, तो यहाँ से जो आवाज़ जाएगी, ये राष्ट्रीय कार्यक्रम है सर हमारा, यहाँ से जो आवाज़ जाएगी वो दूर तक जाएगी, गांव भी जाएगी, ढाणी भी जाएगी, शहर भी जाएगी, कस्बे भी जाएगी, सब जगह जाएगी, कोई भी स्थान हम छूटने वाला नहीं है। मैं सेक्रेटरी साहब को कह रहा था कि अगर अपने को रीजनल ऐसे प्रोग्राम करने पड़े, अगर जिलों में भी जाकर के करने पड़े, तो साल भर हमारा संविधान और हमारे सम्मान के कार्यक्रम होने चाहिए। ये एक विषय मैं आपके बीच में रखना चाह रहा था। दूसरा एक विषय, एक और महत्वपूर्ण विषय मेरे ध्यान में आया, तो मैं आपके ध्यान में ले आता हूँ। सर, कई बार लोग कहते हैं, जब हम लोकसभा में, राज्यसभा में बहस सुनते हैं कि सर ये फेडरल स्ट्रक्चर है, हमारे संविधान की मूल आत्मा है। ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर को कभी सुप्रीम कोर्ट ने अपना परिभाषित किया होगा, इसमें केशवानंद भारती केस में, लेकिन हमारे संविधान में सभी देशों की अच्छी बातें ली हुई है। इसलिए जो बाबा साहब अंबेडकर साहब ने एक कोट कहा था, उसको कहकर के मैं मेरी बात को समाप्त करूंगा। अन्यथा तो हम धारा 370 भी नहीं हटा सकते थे, सब हमारे संविधान में व्यवस्था है। अन्यथा तो हम 3 तलाक जैसी बुराई को भी समाप्त नहीं कर सकते थे। महिला आरक्षण का प्रावधान जिसका जिक्र अभी उपराष्ट्रपति जी कर रहे थे, वो भी हम नहीं कर पा रहे थे। तो ये हमारे संविधान में जो चीजें दी हुई है, और संविधान के अनुसार ही सरकारें चल करके देश को आगे बढ़ा रही है। मैं बाबा साहब का एक कोट है जो मैं कहना चाहता हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। बाबा साहब खुद कह रहे हैं, कोट अनकोट मैं कह रहा हूं, द कॉन्स्टिट्यूशन इज ए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन इन एज मच एज इट एस्टेब्लिशेज ए ड्यूल पॉलिटी। द यूनियन इज नॉट ए लीग ऑफ स्टेट्स। कई देशों में लीग ऑफ स्टेट की बात कही है, यहां बाबा साहब कह रहे हैं द यूनियन इज नॉट ए लीग ऑफ स्टेट्स यूनाइटेड इन ए लूज रिलेशनशिप, नॉर आर द स्टेट्स द एजेंसीज ऑफ द यूनियन deriving power from it. Both the union and the states are created by the constitutions. Both derive their respective authority from the constitution. तो बाबा साहब ये कह रहे हैं कि कोई आदमी बड़ा नहीं है, कोई आदमी छोटा नहीं है। कोई अगर पावर ले रहा है, कोई यूं कहता है कि मैं सुपीरियर हूं, संविधान कहता है सेपरेशन ऑफ पावर है, आर्टिकल 50। संविधान कहता है कि सबको अलग अलग काम दिए हुए हैं, विधायिका अपना अलग काम करेगी, कार्यपालिका अपना अलग काम करेगी, न्यायपालिका अपना अलग काम करेगी। लेकिन अगर किसी को कोई अथॉरिटी मिली हुई है तो वो खाली संविधान के कारण ही मिली है। इसलिए सर्वोच्च कौन हुआ? संविधान। सर्वोच्च कौन हुआ? सर्वोच्च कौन हुआ? इसलिए हमारा संविधान, हमारा सारे कार्यक्रम हमने आज रखा है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय विधि एवं न्याय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल जी। ये हमारे भारतीय गणतंत्र का 75वां वर्ष है, और ये हमारे संविधान और हमारे देश को बांधने वाले मूल्यों का जश्न मनाने का अवसर है। और आज के इस अवसर पर हमारा सौभाग्य है कि हमारे देश के उपराष्ट्रपति जी हमारे बीच उपस्थित हैं। और आज के इस अवसर पर अब मैं माननीय उपराष्ट्रपति जी से करबद्ध निवेदन करना चाहूँगी कि अपने आशीर्वचनों से हमारा मार्गदर्शन करें। जोरदार तालियों से स्वागत करें माननीय उपराष्ट्रपति जी का। Honorable Minister of State, Independent Charge for Law and Justice and Parliamentary Affairs also, Shri Arjun Meghwal ji, Honorable Attorney General of India, Shri R. Venkataramani ji, Mrs. Venkataramani ji,
Shri S.K.G. Rahate, Secretary, Department of Justice, Professor Nageshwar Rao, Vice Chancellor, IGNOU, distinguished audience, and in particular boys and girls. I am grateful that I have been afforded this great opportunity to share my thoughts with you all on the great occasion when we'll be entering after 2 days, 75th year of our Republic. When I entered the premises, I had the good fortune to be blessed when I paid my tributes to the architect of Indian Constitution, Dr. B.R. Ambedkar. He means a lot to all of us. Not only he was architect of Constitution of India, his rise to that position was not easy. It was Caesarean, very difficult. He faced great problems. He took them in stride. When I became Member of Parliament in 1989, and that was a long time after we adopted the Indian Constitution, I looked at the list of those who had been given Bharat Ratnas. Dr. Ambedkar was not one of them. It was my good fortune to be part of the government and part of Parliament that did justice to one of the greatest sons of Bharat by awarding him in 1990 Bharat Ratna, 31st March 1990. He should have been awarded Bharat Ratna much earlier. In the same stream, as indicated by the Honorable Minister, and for the same cause, a great justice has been done to another great son of soil from Bihar, Karpuri Thakurji. These two distinguished persons who have got it posthumously were entitled to this embellishment, highest civilian award, during their lifetime. Remember, my dear friends, people have been given Bharat Ratna during their lifetime. It is good. Belatedly, we have a mechanism where there is due recognition to the tallest people who have really created Bharat in which we are living. Amrit Kal has been utilized as a great occasion to remember those who made us proud Indians. Parakram Divas, we had the occasion to celebrate it yesterday. It took us so long to remember the contribution of Netaji, so long. But soothing to note that in past decade, justice has been done to Netaji in various ways. Visit of the Honorable Prime Minister to Andaman Nicobar Islands. Naming those islands, when 75th celebration of Netaji's army took place, Prime Minister was there at the fort. A great recognition. Our heroes of freedom, the list is long, but our boys and girls came to know as if it was in single digit. We have rediscovered our Bharat emotively, nationally, and we have Janjatiya Gaurav Divas, 15th November, Birsa Munda. Look at the way we have put our Bharat on global platform. Yoga is something which we had in us for thousands of years. But gratitude to the Indian Prime Minister of a country that is home to 1/6 of humanity, that he could make this declaration.
in United Nations. In the shortest time, the largest number of nations came forward to support this. And 21st June is International Yoga Divas, celebrated in every nook and corner of the planet. The last one was indeed historic. The premises were precincts of United Nations. It was our Prime Minister there, and we had the good fortune that the entire world participated. I was there at the national event at Jabalpur. A great day. Look at another great milestone, 23rd August 2023, Space Day, because Chandrayaan-3, backed by the power of both genders, landed on South Pole of Moon, created history because no country's space vehicle had landed on that part of the moon. We had Space Day. Look at another significant day. We waited for so long to do justice to half of humanity. Particularly in the last 3 decades, efforts were made to secure justice to our sisters and mothers, that they must become participants in governance by way of a constitutional mechanism. That was expressed by Ambedkar ji. It fructified. And 2 days note are East in history. Note them. 20th September 2023 and 21st September 2023. On 20th September 2023, Shri Arjun Meghwal, whose life has been very tough, I know it personally, comes from a very vulnerable segment of society, got into civil service, facing all difficulties, became a district magistrate to be remembered by one and all, got people's mandate. He introduced that bill to give justice to half of humanity. He is present amongst us. He did so in Rajya Sabha also, because he was fulfilling the dream of our founding fathers of the Constitution, led by Dr. Rajendra Prasad and Dr. B.R. Ambedkar. He was fulfilling the aspirations which our womanhood had waited for decades. And look at the changing profile of Bharat. What was passed by Parliament, both houses, became a constitutional provision when under Article 111, Shrimati Draupadi Murmu signed it. A tribal lady occupied Rashtrapati Bhavan as the first citizen of this country. I have said all these things because, as rightly highlighted and focused by the Honorable Minister, our Constitution is finally very strong. Our Constitution has enabled us to traverse the difficult terrain and record epochal developments. If we look at our constitutional journey, we did have a dark chapter, a chapter which we can never have now. No one on the planet can generate a system, a mechanism, pernicious ecosystem, depriving human rights, putting people in jail by thousands with no rights available to them. I am referring to declaration of emergency. I want boys and girls to know when the president signed it, what hour it was, how this could happen. Constitutional prescription is loud and clear. The president is bound by the advice tendered by Council of Ministers. Was it by Council of Ministers? That was the darkest
shameful period of our constitutional history and a blemish on our otherwise sublime civilizational journey of 5,000 years. We never had those in governance going to that level as to deprive millions of their fundamental rights and putting them in jail. Those who were put in jail became prime ministers later on, many of them. That was a shameful period. That was also the time we expected another organ of the state will rise to the occasion. The judiciary. Unfortunately, for judiciary also, it is one of the darkest periods. 9 high courts in this country, 9 high courts, boys and girls, 9 high courts, in one voice, took a stand, emergency or no emergency, fundamental rights of the people cannot be put on hold. They are ever alive. You can go to the court to vindicate your fundamental rights. Indian Constitution has enabled its citizens to directly have access to the Supreme Court under Article 32 for vindication of fundamental rights. Unfortunately, painfully, and a pain which people like Venkataramani will always harbor in their hearts, he would ever wish in ADM Jabalpur Supreme Court had not overturned those 9 high courts. But 2 of the distinguished judges of that judgment, the Chief Justice and his number 2, very distinguished judges, they had the occasion to express their public regret. One of them, the second senior most then, expressed it in an interview when he attained the age of 90 years. But friends, there can be no regret allowed when people fail in constitutional positions. When we are in a position of constitutional authority, we have no alibi. We have no escape route. We have to vindicate the trust imposed in us by the Constitution. Friends, this journey of 75 years and a little before that independence, midnight of 14th and 15th August, we had tryst with destiny. Our parliament met at midnight. The first prime minister ended a speech. That started our journey. Then we had another tryst with destiny of a different nature, which in one of my address I had called tryst with modernity. That has changed the entire landscape of our business, our governance. This tryst with modernity was also at midnight. It was the night intervening 30th June and 1st July 2017. My good friend and a great son of this country, Arjun is not amongst us today. He worked hard for it. The Honorable Prime Minister and the President being there unfolded the world's largest, most impactful transformational tax regime, GST. It was at midnight. This tryst with modernity, we in this country have a small section of the people. They know only one thing, condemnation. We should never be against criticism. Criticism helps us. Criticism is positive. Criticism gives energy. But condemnation, thoughtless condemnation, and look at the wonders which GST has done now. When we go into the record collections every month, we are proud of it. Goods and service tax has indeed become good and simple tax, and the world is amazed at it. Look at the second technological situation which the country had. We were faced with pandemic COVID.
It affected the entire planet in a non-discriminatory manner. High and mighty, rich and poor, people of all sects and religions were bled by pandemic. But ours was the only country that faced it. And while facing pandemic successfully, then for a population of more than 1.3 billion, we assisted more than 100 countries. But what is outstanding and significant is that your co-vaccine certificate was electronically available. More than 200 million people had it electronically available. The entire population had the benefit of it. A great achievement by this country. Friends, tryst with destiny, tryst with modernity, and we had on 22nd January 2024, tryst with divinity. The day is east in the history of this country for several reasons. The consecration ceremony of Ram Lalla in Ayodhya Dham on that day marks three things fundamentally. One, this country believes in rule of law. The passage to construction of Ram Mandir took very long, was hurtful to the sentiments of millions and millions of people in the country and many outside. Every day was very painful. Still, in this land of Gandhi and Buddha, in this land which has civilization at depth of 5,000 years, it was in accordance with law. And that was a great achievement. Second, it reflected the will of the framers of Indian Constitution. I am pained and I will appeal to the Honorable Law Minister. Our young boys and girls are not exposed to the Constitution which has been signed by the members of the Constituent Assembly. That document, Honorable Minister, you will find is a different one. That document contains 22 miniatures. They are positioned thoughtfully above each part of the Indian Constitution. When you had the occasion to see a small film indicating those things, I saw what was there in the pillar at Somnath. It was there. If we look at the first part, second part, it reflects Gurukul and our ancient civilization. If you look at the miniature above part 3, the part concerning fundamental rights are quintessence to democracy. They are inalienable facets of democratic values. You cannot claim to be living in a democracy if you do not enjoy fundamental rights. We curse emergency of the darkest period because fundamental rights were sabotaged. In that part, you have Ram, Sita and Lakshman coming back to Ayodhya. Our founding fathers of the Constitution realized this essence of our culture. When we go to part 4, directive principles of state policy, we have in the miniature indicating Lord Krishna giving his advice at Kurukshetra to Arjuna. And go all through, you know it. But you have not been able to see it because it is not part of the books. I think the Honorable Minister will take initiative to ensure that the country is made available in authentic form only that Constitution
which has been given to us by our founding fathers and constitutionally amended further, that will have 22 miniatures. Friends, we need to be extremely alert, apart from our fundamental rights, as to our fundamental duties. It's a time for us that we must turn out to be very good citizens. And from that perspective, I will make an appeal. Time is a constraint. I'll make an appeal. An individual. What can an individual do? An individual must immediately go to a new part which was added, Part 4, capital A, Fundamental Duties. Read them, 11 of them. Initially there were 10, one was added later on. When you will read those 11 fundamental duties, you will find these are fundamental to our daily life. It takes no expense. We can do it. We must always take pride in being Indians. भारतीयता हमारी पहचान है. इस महान देश भारत के हम नागरिक हैं. इसकी अप्रत्याशित, अकल्पनीय प्रगति से हम अभिभूत हैं. दुनिया अचंभित है. भारत का लोहा दुनिया मान चुकी है. दुनिया की संस्थाएं क्या कहती हैं भारत के बारे में? कि आज के समय दुनिया में भारत सबसे तेज गति से बढ़ने वाली आर्थिक शक्ति है. We today, friends, are the 5th largest global economy. We have marched ahead of Canada, UK, France. In 2 or 3 years, we'll be marching ahead of Germany and Japan. We'll be the 3rd largest global economy. We can't stop at that. So there was a time in our illustrious past when we were at peak. We have to reach that peak. And the Prime Minister, with his vision, is working in overdrive to secure that Bharat at 2047 becomes a developed nation, a global power. Because our Bharat, as is the spirit and essence of our constitution, it stands for peace, harmony, stability. The only nation perhaps in the world that has never engaged in frontier expansions. We have suffered invasions. We have absorbed those people. Never believed it. It is a time, for the first time in our history, that the world recognizes in diplomacy power of Bharat. We are guided by one interest of the nation and welfare of the humanity. And that is why the entire world acknowledged the excellent outcome of G20, which was a global high benchmark in our soft diplomatic power. ये मेरे कहने का मतलब यह है कि हमारे संविधान ने हमें सब कुछ दिया है. यदि 3 संस्थाएं, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, अपने दायरे में रहकर मर्यादित आचरण कर आगे बढ़ेंगे, तो भारतीय लोग इतने प्रतिभाशाली हैं कि कुछ भी उनके लिए असंभव नहीं है. I appeal from this platform that we are lucky to have highest brains heading these organizations. The executive is being led by the Prime Minister, a man who is a visionary, who thinks big, achieves with expedition, achieves for one and all, achieves at a dimension which we never imagined. We have robust judicial system. We have sound legislature. Let me remind you, boys and girls, when our Constitution was framed, you must find out who were the people who framed the Constitution. You will be enlightened to know that none of them was directly elected by the people. They were indirectly elected, one category, the large category. The second category was representatives of princely states. And the third, 4,
There were commissioners. One was in Rajasthan also. One each. Then, while the Constituent Assembly was in progress, we had division of the country. So part of the contingent left. The number was reduced. They were fired by the zeal of nationalism. They faced some of the greatest contentious issues, divisive issues of language, of boundaries. They overcame all those things, not by disruption, not by disturbance, but by dialogue, debate, discussion, deliberation. Therefore, the segment to which I belong, by virtue of being chairman of Rajya Sabha, I sometimes wonder, when the executive is marching on fast track, earning global laurels, giving relief to more than 1 billion people, making available an ecosystem where every Indian can unleash his or her energy, exploit potential, realize ambitions and dreams, where a mechanism has been developed, where power corridors have been sanitized of corrupt elements, when there is rigorous enforcement of the constitutional essence, equality before a law. There is none who cannot be beyond the reach of law. Everyone is. Some people were in doubt. I am pained with events that take place when destruction of public property takes place. We take on the law enforcing agencies and declare we have won because the barricade has collapsed. Our judiciary is a robust system, manned by very gifted people. There will always be issues between three organs because we are in a dynamic world. But issues have to be ironed out, have to be moderated. They don't have to be on public platform. They have to be in a structured manner. But with legislature, we need to do some homework. How efficient your legislators are, boys and girls, is in your hands. You have to take a call. Would you want parliament or assemblies to be dysfunctional? Would you want them to be ravaged by disruptions, disturbances? You certainly would want. There should be debate, dialogue. We had a great legislation. Earlier we used to have Dandvidhan. Now we have Nyayvidhan. But to my utter pain, the legal luminaries, the legal eagles that dominate the legal firmament, none came forward in Rajya Sabha to make a contribution. When you have an opportunity, a historic opportunity, when epochal legal mechanism is being developed, we are being unshackled from colonial regime. Why did you not make your input available? Your participation was not there. Young boys and girls, we may be gone. We will not be around, most of us, when Bharat is at 2047. But each one of you who is present in this house is a foot soldier of this journey. You are taking glory of Bharat. You will be ensuring it be on incremental trajectory. You will ensure rightful place in the Committee of Nations what Bharat will be at 2047. And therefore, there are issues on which your silence will resonate in your ears for years to come. If you find something is unacceptable, please go by the diktat of your conscience, spirit of nationalism, belief in your nation, and try to put in correctional mechanism. इसीलिए मैं अंत में ये कहूँगा, हमारा संविधान का सबसे बड़ा सम्मान हम तब कर सकते हैं जब नागरिक की हैसियत से 24/7 हम भारत माँ की सेवा में लगे रहें। हमारी देश की प्रगति एक इतना महायज्ञ है, इस महायज्ञ में हर किसी के आहुति की आवश्यकता है। संस्थागत आहुति आएगी, पर सबसे बड़ा योगदान आम नागरिक का है। और इसका कारण है, there is no one more
critically, significantly, a stakeholder in governance than boys and girls like you. Your stake in governance is maximum. You would never want corruption. You want meritocracy to flourish. You won't want that you have opportunities before you. Now you must know fully well, we are a country that is home to startups. We are a country that is home to unicorns unparalleled in the world. If you have an idea, put it in action. वो भारत के संविधान का सबसे बड़ा सम्मान होगा. मेरे मन में कोई शंका नहीं है कि भारत के उत्थान में जो भी कोई बाधा बनेगा, ये उत्थान का तूफान है. ये तूफान पॉजिटिविटी का है. ये तूफान ईश्वरीय शक्ति के द्वारा दिया हुआ है. ये तूफान दुनिया के हित के लिए है. हमारे 5000 साल की जो संस्कृति की विरासत है, उसको नमन का है. It is unstoppable. Rise of Bharat is unstoppable. Let us contribute to the nuclear speed, rocket speed of this growth. Thank you so much. Thank you, Honorable Vice President, for your guiding and inspiring words. Thank you so much. और मैं माननीय मंत्री जी से विनम्र अनुनय करती हूँ कि कृपया माननीय उपराष्ट्रपति जी को स्मृति चिन्ह भेंट करें. A memento to be presented to Honorable Vice President. It's a beautiful golden plate on which preamble of our Constitution is engraved. Thank you, Honorable Minister. और आप सबसे अनुरोध कार्यक्रम का समापन राष्ट्रगान के साथ. कृपया राष्ट्रगान के सम्मान स्वरूप अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं. जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता. पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल बंगा. विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा. तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे. गाहे तव जय गाथा. जन गण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता. जय हे जय हे जय हे जय 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 हे. आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद. आदरणीय माननीय उपराष्ट्रपति महोदय, आपका एक बार पुनः हृदय से आभार आपकी गरिमामय उपस्थिति के लिए. May I please request everyone to please be seated till the departure of our esteemed guests from the dais. And I have special instruction information for you all. Special lunch arrangements have been made for you all, so kindly note where you all have to proceed to. The secretary level officials are